Bright uniforms, colorful turbans, traditional attire, uniforms, and of course, the tricolor waving proudly among the crowd. There are people who have traveled from different states, from cities and villages, from different professions and different walks of life. And just look at these beaming faces. There is excitement, pride among the elders, and a wonderful sense of anticipation everywhere you look. For a few hours today, all these different journeys have brought everyone at the same place. Different languages, different traditions, different ways of life, but one feeling that brings everyone together, the feeling of being Indian, and perhaps that is what makes Independence Day so special. The National Guard of Honor and the Guard of Honor ready at their feet, smart and stoic. Upon his arrival at the Red Fort, the Prime Minister will be received by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth and Defence Secretary Shri Rajesh Kumar Singh. The Defence Secretary will introduce the General Officer Commanding GOC Delhi Area, Lieutenant General Rajesh Sethi, to the Honourable Prime Minister. The GOC Delhi Area will then conduct the Prime Minister to the saluting base, where a combined Inter-Services and Delhi Police Guard will present general salute to Shri Narendra Modi. Thereafter, the Prime Minister will inspect the Guard of Honor. The humidity hasn't dampened the high hopes and the happiness of the event. Everyone in their seats awaiting the arrival of the Honourable Prime Minister, especially the youth power, the best in our country, who will take the torch forward, the NCC cadets, and every audience member in this vast ocean. A whole view of the arena coming to you from a specially mounted Doordarshan camera. Everyone awaiting, everyone excited, looking around as to when the Prime Minister shall arrive. The Raksha Mantri and the Raksha Rajya Mantri happily awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts. लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने ज्ञान पथ पर जो एनसीसी कैडेट्स मौजूद हैं, जो युवा शक्ति मौजूद है, उनमें खास उत्कंठा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब प्रधानमंत्री महोदय देश को संबोधित करेंगे और उसके बाद जब उनकी वापसी हो रही होगी तब वे उनके पास आएंगे। लेकिन यहाँ वायुसेना के जांबाज मी-17 हेलीकॉप्टर्स में वायु विचरण के लिए पूरी तरीके से तैनात हैं, और ये वो मी-17 हेलीकॉप्टर्स हैं जो जब प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे उसके ठीक बाद लाल किले की प्राचीर के सामने लाल किला परिसर को पुष्प वर्षा से आच्छादित करते हुए नजर आएंगे। मौसम चाहे कैसा भी हो, परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, लेकिन देश के स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का उत्साह, उनका जज्बा देखते ही बनता है। हर खासो आम, हर आम और खास व्यक्ति आज के इस राष्ट्रीय उत्सव के समारोह में जुड़कर खुद को बेहद खुश, प्रसन्न और भाग्यशाली महसूस करता हुआ नजर आता है। And this is truly a moment for these children, these cadets who are here at the Independence Day celebrations. Imagine being from varied parts of the country and then coming together in unison, getting prepared, getting ready, reaching here early in the morning and then excitedly waiting for the Honourable Prime Minister and his inspiring words. And there's the cavalcade of the Honourable Prime Minister now swiftly moving towards the ramparts of the Red Fort. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल किले की प्राचीर पर पहुंच रहा है। सधी हुई रफ्तार से अग्रसर ये काफिला, ब्यूगलर्स का बिगुल घोष इस बात का परिचय देता हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश के सर्वोच्च नेतृत्व का आगमन हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख का आगमन हो रहा है लाल किला परिसर में।